Hello and welcome to The Big Fight, a show that is young at 23, the oldest running debate show on Indian news television. I'm Sanket Upadhyay. There's a crisis, huge crisis in the mountains. We've all seen those images, those pictures from Joshimath. The city is sinking. According to the government's own data, ISRO satellite has been able to ascertain that in the last 12 days, the ground in some areas of Joshimath has moved by 5.4 centimeters, which means it has gone in by 5.4 centimeters. In many areas, there are cracks that are increasing continuously. For instance, a badminton court where people were playing badminton on New Year's Day has developed a crack which is increasing. It is more than a feet wide, ever increasing. What exactly is happening in Joshimath? Who's responsible? Land subsidence, if you speak to any geologist, anyone who studies seismology, they will tell you is a natural phenomenon. But what is happening in Joshimath, is that a natural phenomenon or a man-made disaster? A number of reasons have been given by those who are agitated right now. For instance, they blame the NTPC project. For instance, they blame the road widening or construction work which is going on. They blame the rampant construction work in Joshimath. Add to that the fact that most of these houses in Joshimath do not follow the old trusted way of constructing houses in the hills using wood and stones. Now people use bricks and cement. Now that's not how you construct houses in the hills. So I think the most important question right now before we go forward is to basically decide and pin the blame. Where does the buck stop? Who is responsible for this very human crisis that is unfolding in Joshimath? And what are the solutions? Let me introduce our guests one by one. Ram Kumar Walia is the former Minister of State in the government of Uttarakhand, leader of the BJP. You're also an advisor and a member of Fertilizers Ministry in the government of India. Thank you very much. Manish Khanduri is a senior leader of the Congress party in Uttarakhand. Thank you very much, Mr. Khanduri. Purushottam Sharma has been associated with the Saving Joshimath since 2002, I believe. So it's been your long-standing mission to secure Joshimath from the various tragedies that have unfolded and may unfold. We also have Atul Sati. He's the convener of a group, Joshimath Bachao Sangharsh Samiti. He's an activist, regularly campaigning and of course agitating on the ground. Vineet Gehlot is a seismologist and former director of the National Center of Seismology to explain to us what exactly is happening. Dr. Charu C. Pant, he's a retired geologist from the Kumaon University. Thank you very much, Dr. Pant, for joining us. This is an important discussion. It's got a human aspect, but one has to understand where to put the blame, where to fix accountability, and what solutions from here on. So as the format of the show dictates, we give 1 minute of time to each of our panelists for their opening comments. We call it the first punch. I would like to begin with you, Mr. Walia, your opening statement. Your time begins now. देखिए, हमारा जो प्रदेश है आपदाओं का प्रदेश है, जैसी हमारी पहाड़ का जीवन है, वो पहाड़ की तरह ही बड़ी समस्याएं हैं। आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन हमारे लोगों को उनसे उभरना भी आता है। ये भी एक बड़ी त्रासदी है, दैविक त्रासदी है, और वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं कि क्यों इस प्रकार का हुआ है, इसका कारण क्या है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार के सामने जो चुनौती है उनको स्थापित करने की है, उनका जान माल की रक्षा करने की है, सरकार अपना काम कर रही है। और फौरी तौर पर हमारी उत्तराखंड की सरकार ने 45 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, जिनको करीब 42 लोगों को 1.5 लाख रुपया हम लोगों ने अभी फौरी तौर पर दिया है। इसके अलावा भी और मदद उनको दी जानी है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसका संज्ञान ले रहे हैं और दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कल बैठक की है और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश जारी किए हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं और लोगों को इस त्रासदी से उबार सकते हैं। मनीष खंडूरी जी, if you take a look at the causes and consequences, I mean, if you take a look at the long term and if you take a look at the short term, both the consequences and the response,
In terms of the long-term issues, I think a lot of things, events are responsible, not just one individual person or government. If you take a look at the short-term response, I think the short-term response is essential in terms of establishing rehabilitation to an extent of the people, compensation of people on the ground. I think that our current focus should be there as whether in the government or in the opposition. And once that is done, you need to decide why this has happened. And I think the answers have been pretty clear. I think it's the model of economic development. I think it's the model of construction, the model of building roads. All of that is coming to an head. And I think you asked the question, is this a natural phenomenon or is this a man-made phenomenon? And Valyaji said, I mean, Devik, you said something like that. My opinion is that this is a partly natural phenomenon which has been greatly exaggerated by, is greatly man-made. I would put it that way. And that's a very, very sound and important assessment that you've made. That a part natural phenomenon which has been aggravated and exaggerated by man-made activities. Hugely. Right? We'll come to that in just a short moment. Purushottam ji. देखिए जोशीमठ में जो अभी संकट आया है, ये संकट पूरी तरीके से हमारी जो सरकारें हैं ये उनके द्वारा लाया गया संकट है। कॉरपोरेट लूट के लिए, कॉरपोरेट मुनाफे के लिए जिस तरीके से पहाड़ की संवेदना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये उसी का नतीजा है। और इसके लिए जो एनटीपीसी का जो पावर प्रोजेक्ट है वो और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो चार धाम यात्रा का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जोशीमठ के नीचे से एक बाईपास जो है निकाला जा रहा है, बड़े पैमाने पर वहाँ जो है खुदाई हो रही है, तो ये दो बड़े कारण इसके लिए रहे हैं। और इसको लेकर के जोशीमठ के लोगों ने तो 2002 के आसपास से ही आंदोलन शुरू कर दिए थे। अतुल सती जी अभी बात रखेंगे, उनके नेतृत्व में वो हमारी ऑल इंडिया किसान महासभा की ओर से भी लगातार इस सवाल को उठाया जाता रहा है और वो वहाँ के उत्तराखंड के सेक्रेटरी भी हैं। तो ये मैन मेड नहीं बल्कि सरकारों द्वारा थोपी गई आपदा है। एक किस्म से अगर आप पूरे पहाड़ को अगर देखेंगे तो जो जिस तरीके की परियोजनाएं पूरे पहाड़ में चल रही हैं, जोशीमठ की ये घटना अब ये बताती है कि सबका दोबारा से मूल्यांकन होना चाहिए और किस तरीके से वहाँ की बिल्कुल ये एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई है that the very development which is for the people has now become a huge problem for those very people that they would how would they use this development. Atul Sati, your opening comments please. हाँ, तो 14 महीने पहले ये परिघटना शुरू हुई और तभी हम लोगों ने सरकार को चेता दिया था कि बड़ी आपदा आने वाली है। और ये 14 महीने पहले से तो अभी बोल रहे हैं, लेकिन 2003 से हम लगातार इस बात को उठाते रहे कि ये जो तपोवन विष्णुघाट परियोजना है जिसको एनटीपीसी बना रही है, अगर ये परियोजना बनाई गई तो इस शहर के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले से ऐसे अध्ययन होते रहे हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने बहुत पहले इस बात की चेतावनी दे दी थी कि जोशीमठ जो है भूस्खलन के मलबे के ऊपर टिका हुआ है, यहाँ कोई भी भारी निर्माण कार्य इस शहर के अस्तित्व को नेस्तनाबूद कर सकता है। और इसकी लगातार चेतावनियां दी जाती रही, लगातार लड़ाई होती रही, लगातार बोला जाता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो इस सरकार के प्रतिनिधि यहाँ बैठे इनको पता होगा कि हम तो मुख्यमंत्री के पास भी गए, सैकड़ों हमने ज्ञापन दिए, लगातार लिखा गया, बोला गया, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं सुना। और अभी भी जो ये राहत और बचाव कार्य के नाम पर ये सब हो रहा है, इसको लेकर के भी तमाम सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। तहसील में लगातार लोग बैठे हुए हैं, धरना चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है और सरकार अभी भी जो है जनता के जो सवाल हैं उनको हल करने में कतई जो है रुचि नहीं ले रही है, बजाय इसके वो राजनीति कर रही है और ये राजनीति इनको भारी पड़ेगी। ये सवाल पूछेंगे, I'm going to ask these questions of the political representatives here also, but let's get in a word from the scientists also, the geologists as well as the seismologists. Vineet Gehlot, your assessment. Thank you. See, the earth processes are made up of several processes which are governed at different scale. Earthquakes are deep earthquake processes. For example, in case of Garhwal Kumaon, they occur at a depth of 10-15 kilometers. So these are all deep processes which happen at depth. But then there are surface processes, for example, landslide or subsidence, which are partly governed by earthquake process, which is plate tectonics, and partly governed by atmospheric process, for example, precipitation, rainfall, and then hugely depend on man-made activities, which is anthropogenic activities. So
I'm saying that this is so any process, subsidence or landslide is basically a geological process which we call as mass wasting, but then it is strongly influenced by man-made activities. All right, Dr. Pant, what's your view? You see, we all have been debating this thing for the last several days now. Nature gives us signatures. Nature has already warned us several times. It has been warning us, but nobody gives an ear. Nobody gives a thought to it. You see, long back in 1976, when already our report existed about the instability problems of Joshimath, why action was not taken? This is my question. So likewise, if you move around Joshimath or any part of the Himalaya, maybe it Kali Valley or Gori or Dhauli Ganga or Ram Ganga or Pindar Valley or Alaknanda Valley, we have signatures that the entire terrain is unstable. Nature gives us some certain warnings. There's a village just near to Joshimath on the way to down to Karnaprayag. It is a village in the Ganesh Ganga Kashmir. It is a small hamlet of residents of about 1,000 people live here. It is called Molta and Mahamulta, these two villages. I was there, my PhD student was working there. So entire village, it has shifted its location. It can make a headline someday that the people of Molta and Mahamulta are no more. They are all buried under the debris of the landslide. So it is successive, you see, we have to take responsibility. We cannot circle from one party to another party. I have heard these people who have different political hues, but you see, we have to act. We have been just debating, Correct. People already warning has been given by nature, if you travel anywhere. This is an important point that you're making, and one more thing that one seems to be hearing now in the Uttarakhand government now, Mr. Walia, is that an assessment will be done to, number one, identify why this is happening, right? Because even now we do not know what is responsible for the land subsidence in Joshimath. Is it the NTPC plant? Is it the road widening? Is it the rampant construction? Is it the fact that there is no sewage treatment in Joshimath? The reason is not known. But apart from that, there is also a view that perhaps now Joshimath will have to be relocated. Perhaps a new Joshimath will have to be made. Do you think that's a viable solution? देखिए, ऐसा है कि वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं क्या कारण है। फिलहाल जो जांच में आया है तो एनटीपीसी के जो टर्मिनल है उसके लिए बहुत ज्यादा दोषी नहीं है। How can you say this? इसकी जांच हो रही है और मैं आपको ये कहां जांच में एनटीपीसी को संकेत जी बता दूं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता दूं कहां मिली सर? क्लियरेंस नहीं मिली, लेकिन अब तक की जो जांच में आया है क्लियरेंस नहीं मिली है, लेकिन उसके लिए वो ही दोषी नहीं है। बट माय पॉइंट इज मिस्टर वालिया, आर यू नॉट विलिंग टू डिस्काउंट देखिए सुनिए, देखिए ऐसा है कि मैंने आपसे तो पहले ही माफ किए दे रहे हैं। आपसे ये कहा है कि वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं और जांच हो रही है, और मैं आपको सरकार की तरफ से भरोसा दिलाता हूं कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और सरकार भविष्य में ऐसा ना हो उसके भी ठोस उपाय सोच रही है कि क्या किया जाए, आगे के लिए किस प्रकार से योजनाएं बनाई जाएं। देखिए, पहाड़ के विकास के लिए योजनाएं भी जरूरी हैं, ये भी सब मानते हैं कि पहाड़ का विकास भी होना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूं। वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है और ज्यादा उस पर ध्यान दिया जाए। मुझे आप ये बताइए, और ज्यादा ध्यान दिया, सड़क चौड़ीकरण की जो बात हो रही है, दिस वाइडनिंग ऑफ द रोड, आई मीन आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स ओवर द पास्ट 1 week एंड देयर असेसमेंट इज दैट यू कैन नॉट increase the width of a road beyond a particular dimension in the hills. वो माउंटेन सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि वो चीज उस चीज को फैक्टर इन किया गया है? बिल्कुल, ये जो अभी कह रहे हैं वालिया जी, ये दरअसल में सरकार पिछले 12-13 दिन से यही कर रही है कि वो पूरे मामले को दबाने के लिए कोशिश कर रही है। इसके लिए जो जिम्मेदार मेन कारण है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब जांच हो रही है जोशीमठ, लेकिन जोशीमठ को लेकर के अभी भी हमको ऑफिशियली कारण नहीं मालूम। तो
नहीं, जोशीमठ को टेक्निकली आप एनटीपीसी पर ही पूरा दोष नहीं दे सकते। नहीं, जोशीमठ को लेकर के इससे पहले भी ढेर सारी वैज्ञानिक रिपोर्टें हैं, सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों की रिपोर्टें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और इधर जो है ये जो इतने दिन में आप बताइए 12-13 दिन के अंदर सरकार कर क्या रही है वहाँ अभी भी, पहले तो सरकार मानने को ही तैयार नहीं थी कि ये नुकसान हो रहा है। जब वहाँ अतुल सती के नेतृत्व में लोगों ने, पूरी जनता जब सड़कों पर उतर गई, रात को दूसरे दिन मशाल जुलूस निकाला, तीसरे दिन जोशीमठ बंद किया, चक्का जाम किया 5 तारीख को, उसके बाद सरकार हरकत में आई। उससे पहले सरकार मान नहीं रही थी और अब सरकार हरकत में आई है। कह रहे हैं प्रधानमंत्री एक्टिव हैं, गृह मंत्री एक्टिव हैं, मुख्यमंत्री एक्टिव हैं। क्या काहे के लिए एक्टिव हैं? वो कह रहे हैं कि भाई विद्युत कंपनी को, एनटीपीसी को आप दोष मत दो, आप जो है प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को जो बाईपास निकाला जा रहा है उसको दोष मत दो, आप जो है पैनिक मत फैलाओ, आपका घर जा रहा है, आपका जोशीमठ ढह रहा है, इसको लेकर के ज्यादा हल्ला मत मचाओ क्योंकि पर्यटन का सीजन आने वाला है, हमको पर्यटक लाने हैं यहाँ। तो ये जो पूरा दृष्टिकोण है, और इतने दिन में सरकार अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बना पाई लोगों के पुनर्वास को लेकर। In that sense, you see, development alone or developmental projects alone, it's not like they started only when the BJP came to power. Your party was also in power, right? Yes. These development projects have been taking place, and the degradation of the mountains has also been taking place. It's a process in continuum, right? So, given this, will it be wrong to pay? Yes, maybe they're more accountable in fixing this situation now. But would it be incorrect to just blame the ruling dispensation for all the stuff that is happening in the hills right now? No, we don't. See, here's the thing. I think this is what has happened in the hills is a process of learning for all of us. It's a very young state. If you go to the hills, even today, if you ask them, maybe 6 months after this, if you go to the people of the hills and if you ask them what they need in terms of development, they will ask for roads, they will ask for electricity, they will ask for power, and they'll ask this of any party, and they'll ask for livelihoods. The question is, how do you guarantee those while now coming to a sustainably developmental economic model? Our belief is now is that, first of all, we spoke about the immediate response. As Sharma ji had said, that we are very disappointed in the immediate response of the BJP because it came in late. It's been building up for a year and a half, frankly, and it came very late, and it is not enough. I think the figures that were being spoken about, rupees 4,000 compensation, are frankly laughable and not even worth looking at. The other feeling is that there is no concerted action plan which the government is bringing to bear on the situation. I mean, we are not hearing of the most important thing there is compensation, frankly, for the people who are affected. And these are not just hotel owners. They are people, they are poor people, they are people who are struggling, and they have very few means of livelihood left. I think they, instead of coming together and giving an adequate compensation plan, it's being done in bits and pieces. So that's extremely disappointing. I know that there is a larger issue involved environmentally, and that will have to be tackled. But it's not simply feasible without solving the problems of the people on the ground first. Yeah. I mean, we're in the Congress party, and I'm in the business of politics, right? We do that. But you go and see people there. I mean, we went into a house where the owner of the house, Mr. Parma, was crying. There's another person, Mr. Saklani, who has a very gaya behavior, which means his cows are pregnant. Where does he take those? Yeah. So it's a disaster of proportions. His was the first house actually which developed the cracks. Okay, yeah, I did not personally know that. Yes. But you, I mean, if that's politics, I'm happy to do politics 24/7 because we need to raise the voices and need a solution. Now that's one. Sure. So in the short term, what sort of relief is being offered? Is that correct? And then in the long term, sustainable solutions. We'll come to that first. But let me introduce Dr. Sunita Narayan, Director of Center for Science and Environment. Thank you very much, Dr. Narayan. What do you look as the main reason, and do you think that it is very important to look at the plethora of documents and studies that have already been done? We know what an ecologically sensitive place this is. We know about its seismic activity, pending seismic activity. We know what impact these construction projects are going to have, and yet we are looking for those reasons. So what's your assessment? Sanket, I think the writing is on the wall. Whether we read it or not is another matter. The fact is, you're absolutely right. There have been a plethora of studies. There are a plethora of scientific institutions based in Uttarakhand who are supposed to specialize in Himalayan geology, Himalayan science, and yet we just don't seem to
plan appropriately for a fragile ecosystem like the Himalayas. We have a completely false narrative that is taking place here, that this is about growth versus development. This is growth versus environment. This is not development versus environment. This is mindless, senseless development. Okay, it is not good for the environment. It is not good for the people of Uttarakhand. So let's be very clear about this, that this model of so-called growth that has been followed in the Himalayas is just completely inappropriate for a region like the Himalayas. Himalayas is the world's youngest mountain range. It is the most fragile. It is literally building on moraine. People tell me, but you know, the Alps are like this. You cannot compare the Himalayas to the Alps. You cannot compare the Himalayas even to the Sahyadris in India. The Himalayas will require planning. The question that we should be asking ourselves, I think, not the long term, right now, there's crisis, there's compensation, which administrations will handle. The question is, why is policy becoming so knowledge proof? Is it because scientists don't have the courage to speak out? Is it because scientists basically believe strongly that they can conquer nature, that there is no problem in the kind of senseless planning we're doing as engineers? Or is it because policy has become so obdurate that it does not listen to this knowledge, which comes even from its own internal scientific institutions, if it does? I think that's the crisis of Joshimath. But Dr. Narayan, you see, the damage has been done, right? As was being mentioned right here in the studio by Mr. Manish Khanduri, he said that a natural phenomenon exaggerated by man-made activities. So my point is, what does one do? I mean, 25% of the houses in Joshimath are unfit to live. Okay, that's not for me to speak. That's for the administration to handle. They will have to come up with a compensation rehabilitation policy. Quite frankly, our administration is excellent in crisis management. I don't have anything to offer in terms of advice or recommendations to a very capable administration. Okay, tell me something, Dr. Narayan. My next question. You see, now there is talk of rehabilitating people somewhere else, perhaps build a new Joshimath or look for a new space and then settle people there. Ecologically, wherever you go in that region, will be equally sensitive. It will be the same problem. The point is not that the point is the development that you're doing. Let me give you an instance. In 2013, I was a member of a high-level committee. This was in the last government. So I'm not getting into politics. That's why I refuse to join these panels, because they get into tu me and I'm not getting into the political issues. In 2013, I was a member of a high-level panel to look at how many dams should be built in the Himalayas. The engineers came up with a proposal of 9,000 megawatts, 70 projects back to back. Literally, that you would plan that one project would end and another one would start. They actually told us that these 70 projects would affect the river flow up to 80%, which means they would re-engineer the Ganga and its tributaries up to 80%. Okay? And they said that they would take 90% of the flow of the river. That was the design of the projects which are now being built today. When I gave a dissenting view, an alternative view, I essentially said, I'm in favor of hydroelectric projects. It's a green renewable source of energy. It's development for the Himalayas, particularly if you can give power in the hands of people in the Himalayas who can use it for growth. But the fact is, if you build the projects, you build them appropriate for the Himalayas, which means that you mimic the river flow. You reduce energy demand when the water is low. You use more energy when the water is high. All that meant, Sanket, that instead of 9,000 megawatt, only the 4,000 megawatt projects that had already been built would have survived. Obviously, a view which was not acceptable. Today, almost all the 9,000 megawatt are being built. Now, just think about this. When you tunnel, when you build these projects,
the kind of impact that you are doing, the cumulative impact on the Himalayas. And I don't think we are understanding. We keep making this into a development versus environment debate, saying, "Arey, logon ko to bijli chahiye aur hame to employment chahiye." That's not the point. The point is, what is appropriate for the Himalayas? How do you build roads appropriate for the Himalayas? What's the carrying capacity of the towns in the Himalayas? How do you do master planning? After Joshimath, people are writing to me saying, but the same problem in Nainital, same problem everywhere else in every town of the Himalayas, where we are over constructing, not understanding that we need to build, keeping in mind the ecology, the environment. Now, is that not development? And I think that's the question that we should be asking. And Joshimath is not an isolated case. It's definitely exacerbated by climate change, but it is maldevelopment. It is not development. Okay. Dr. Narayan, thank you very much for your inputs. Thank you so much. We also have Kavita Upadhyay, an environmental researcher, also joining us. Before I come to you, Ms. Kavita, let me quickly go across to Atul Sati. Let me see, because he's in Joshimath. Network is a bit patchy. We'll try going back to him in just a short moment. Atul, can you hear me? You heard what Dr. Narayan had to say. देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक वजह हमें नहीं पता चली है सरकार से. We have not known the exact reason for why water is coming out. This is water with muck which is coming out. What could be the reason behind this? देखिए, अब ये सरकार या जो भी वैज्ञानिक हैं जो भी कह रहे हो, कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिस डॉक्यूमेंट को LNT ने जो है लिखवाया था अपने विशेषज्ञों से. उस डॉक्यूमेंट में साफ साफ ये कहा गया है कि इस टेरेन पर जहां NTPC ने हम कहा ये बिल्कुल उचित नहीं था. LNT के जो वो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट पे साफ कहा गया है कि NTPC ने हमको धोखा दिया और ऐसी जगह से टनल बनाने के लिए कहा जहां फॉल्ट लाइन थी. Okay. Kavita Upadhyay, an environmental researcher. We've been discussing about ways to contain the damage. What is your opinion about this? I've been a journalist before I started being a researcher, so I'm more on finding out why things are happening and why everything is going down. So I don't think I am the person to tell what we should be doing, but definitely to kind of be mindful as to how we think of development. As Sunita Narayan also said right now, the kind of development that would be appropriate for a New Delhi may not work for an Uttarakhand, for example, Correct. or any Himalayan state. So just nobody is saying don't have roads, but the kind of roads, the width of roads that we need, that can be limited, and the way roads are built, that has to be thought about. You just can't use the same technology that you're using elsewhere in the country, in the Himalaya too. So just being mindful and just understanding the geology before trying to think of developmental projects, so-called developmental projects. I think that is very important. Okay, a lot has been said about the roads. Mr. Walia, मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि सड़क के बारे में जो चार धाम सड़क परियोजना है, रोड वाइडनिंग प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग, इसके बारे में बहुत बात हो रही है यहाँ पर. आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाई, एक कैरिंग कैपेसिटी होती है पहाड़ की. आप मजबूत सड़क बनाएं, वो ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि बहुत चौड़ी सड़क बनाएं. वो लग्जरी नहीं है पहाड़ में आपके पास. देखिए, अभी पूरे विश्व से हमारे उत्तराखंड में लोग आ रहे हैं और सभी चाहते हैं कि चार धाम यात्रा एक ऐसी हो कि जो हम अधिक से अधिक लोग कर सकें. उसके लिए सड़कों की भी आवश्यकता है, उसके लिए उनको सुविधा देने की भी आवश्यकता है, पहाड़ के विकास के लिए भी सड़कों की आवश्यकता है. पहाड़ का विकास भी तभी ज़्यादा संभव हो सकता है जो हम अधिक से अधिक सड़कें बनाएं, राजधानी से सीधी हमारी कनेक्टिविटी हो. तो सड़कें बनाना जरूरी है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि वो वैज्ञानिक तरीके से हम लोग उसको कर रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से हो और ऐसे रास्ते निकाले जाएं कि सड़कें भी बने और हमारे पहाड़ को नुकसान ना हो. लेकिन वो तो नहीं हो रहा ना. नहीं हो रहा है और जो हुआ है, देखिए, मैंने उसको कोई क्लीन चिट नहीं दी है NTPC को. मैंने ये कहा कि अब तक कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि वही दोषी है. मैंने ये कहा है और निश्चित तौर पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे. विनीत गहलोत, I want to come to you.
you see, we've had this discussion in the past also on the one aspect which everybody tends to forget when you do your vikas and development in the hills, and that is the tectonic plates, the seismic activity, and the seismic zone in which the entire Himalayan range lies. Seismic zone 5, highest risk. And in a situation like this, where Joshimath is, where the land is sinking, the gaps are widening, God forbid if this seismic activity happens, what remains? I know this is slightly alarmist, but Yeah, I mean, that's a very valid point. But, my main concern is that our scientific thinking is strong. My problem is our capability of thinking of good developmental project is fantastic. But the problem comes when we execute them and when we implement them. And that's where the whole problem lies. There's absolutely no issue that you cannot do this, you cannot do that in seismic zone 5 or seismic zone 4, whatever it is. I give you a best example. Though it's from outside, but look at the wonders what engineers have done. Look at the Fukushima nuclear reactor. It was made right at the top, on top of the subduction zone, where magnitude 9 earthquake occurred. And mind you, structurally nothing happened to the nuclear reactor. It's only the water which entered, because of which the problem occurred. So the structurally you can make strong structures. But with us, the problem is implementation, execution. The whole thing lies in the hand of contractors. That's true. I mean, again, for a structure like Fukushima, you would need a great amount of investment. And then, a bulk of these people who constructed their houses, Dr. Pant, in Joshimath, the houses that are sinking, are typical New Delhi, Moradabad type houses. Brick. Not all. Sorry? Not all, I think. Not all the houses are of Moradabad type or Delhi type. Yeah. They are very ordinary houses, the common houses that are found in the hills. But some new hotels that have come up slope, they are definitely putting a load. There is no denial. This is all landslide debris over which Joshimath is located. There are no hard rocks. I have been there. There are no hard rocks around. There is no exposure. We call it outcrop. There are no outcrops. Only it is soil right from the top of the hill, the ropeway up to the valley. There are no rocks. The rocks are just south of Joshimath. So you see what type of development Vineet was telling that we have technology, anything can be done. He was citing the example of Fukushima. You see, it needs investment, but alternative things are available. We can now plan for small cities, smart cities, 2,000 people, 3,000 people, not a conglomeration of big houses. Let me ask you this question. See, through the course of this coverage, we also did a documentary on the sort of construction material that one ought to use, which was used in the hills to construct houses in the past, and those houses have withstood the test of time for 200, 300, 350 years. This is stone, wood, stone, wood, and that formation. Stone roofs. Exactly, and that has worked. Why don't you think that we can't go back to the same formation? Of course, it is expensive. There are issues involved. You may not get, the contractors who would be willing to do that. We had ancient wisdom. That's right. That can be deputed now. But anyway, whatever it is, the load has to be reduced. Yeah. We have to think for alternatives. The immediate thing that the people are to be provided some good relief, good shelters. Correct. It is cold. It is already snowing there. Yeah. So people are to be provided good accommodation and facilities. Absolutely. And for future, as far future is concerned, we can have small townships of 2,000 people, 3,000 people in certain areas not which huge are geologically and geologically suitable. We have to look for alternatives. Correct, Development has to go. We need roads. We need hydropower.
Yeah, go for small cities, small towns. Manish Yeah, Kanduri, small let's talk about these. hydropowers, Let's talk run about of the these river houses. valley. You see, obviously, people will build a house, but why should there be a house only built using concrete and slabs and material that you would use in the plains? Well, And where does the problem lie? Where are those artists, those contractors who are qualified enough to build such houses? in theory, Uttarakhand is supposed to be, we have a lot of organic crops. I'll start with that example. And you're supposed to eat madwa ki roti, we're supposed to eat bhat ki dal. But if you find what the ordinary person eats there, all the food is being, imported, if I can call it, from the plains. So the dal, the chawal, the roti that you're having has completely displaced the local population's food habits over years. Exactly the same thing has happened in every other aspect of Uttarakhand's economic development. It's much more cheaper. First of all, it can happen on a larger scale to construct those kind of houses. You go to build a stone house and a wood house today, you don't find those artisans, and they're twice or thrice as And expensive. it'll be horribly expensive. Yeah, I'm asking the question of people like us here. How many of us, if you were to build a house in Uttarakhand today, would go for stone and wood houses, given our budgets? How many? How many of us have done You're it? saying it costs thrice as much. I'm saying it might cost more than thrice as much. And the वालिया time जी that आप it takes. बताइए, अब आप सरकार में हैं, मैं अगर आपसे ये पूछूं, अगर ये योजना आ जाए, like a scheme from the central government, you've got a skill development ministry, right? आप ये जो artisans हैं, जो लोग ये घर बनाते हैं, जो contractor हैं, जो खत्म होते जा रहे हैं, you preserve their knowledge. उसके बाद आप अपना अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को यूज कीजिए. आप चाहें तो एक स्कीम बना सकते हैं आगे चल के. एंड अ सजेशन आल्सो केम इन बाय डॉक्टर पंत. गो फॉर स्मॉलर सिटीज, नॉट सिटीज, लाइक स्मॉल टाउन्स, 1000-2000 की आबादी वाला. देखिए, निश्चित तौर पर सरकार इस दिशा में काम कर रही है और भविष्य में जब आप देखेंगे कि भवन निर्माण किए जाएंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा. और हम भी चाहते हैं कि पहाड़ में ऐसे घर बने कि जो मजबूत भी हों, भूकंप विरोधी हों, तथा जो छोटी मोटी आपदाएं आती हैं, वहां पे बार बार आपदाएं आती हैं, उनको भी बर्दाश्त करने की ताकत उन मकानों में हो. तो इस प्रकार की योजनाओं पे कार्य चल रहा है और भविष्य में आप देखेंगे कि अधिकतर जो मकान बनेंगे इसी प्रकार के आपको दिखाई देंगे. जी पुरुषोत्तम जी. नहीं, ये गलत बोल रहे हैं. असल में हम लोगों के जो परंपरागत जो मकान बनाने की पद्धतियां थी, उसमें पत्थर, लकड़ी मेनली इसका उपयोग होता है. और अभी जो सरकार की पॉलिसी है, ये समुद्र तल से 1000 मीटर से ऊपर के जो इलाके हैं, उनमें हमें अपने खेत से, मेरा अपने खेत में अपना पाला हुआ पेड़ काटने की इजाज़त नहीं है. तो मकान के लिए हमको लकड़ी चाहिए. पहले जो वन कानून थे उसमें हमको हक की लकड़ी, रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ मिलता था साल में एक, सब खत्म हो रहा है. हमें अपने खेत से अपना पाला हुआ पेड़ काटने की इजाज़त नहीं है. तो जब हमको ये इजाज़त नहीं है, जो नया वृक्ष संरक्षण कानून वहाँ बना है, तो उसके बाद जो है लकड़ी और पत्थर के उपयोग से तो मकान बनाना लोगों के लिए असंभव है. बिल्कुल बिल्कुल. जहाँ तक जोशीमठ का सवाल है, जोशीमठ को लेकर के जो बातें आ रही हैं अभी तक, तमाम जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण वगैरह तमाम होते रहे हैं और जोशीमठ संघर्ष समिति की तरफ से अतुल सती आए दिन वहाँ तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है पत्रकारों के सामने रख रहे हैं. जी. जोशीमठ के ठीक सामने जेपी कंपनी की एक विद्युत परियोजना बनी है, उसमें पूरा चाई गांव खत्म हो गया. चाई गांव का भी यही हाल हुआ जो हाल अभी जोशीमठ का हो रहा है. और आज जो है चाई गांव की पूरी अर्थव्यवस्था खत्म है, चाई गांव जो है लगभग खत्म है. तो सरकार तो सीखना नहीं चाहती है. जोशीमठ की परियोजना तो बाद में शुरू हुई है. तो ये जो है in the name of vikas. So what sort of vikas is this which will leave no people for this vikas to be used? That's the most important question. Solutions required both in the short term and in the long. Thank you very much for joining us, all of you. We're stopping for a short break at this moment. When we come back, we'll speak to the former Chief Minister of Uttarakhand, Harish Rawat. Welcome back to The Big Fight, and now I'm joined in by the former Chief Minister of Uttarakhand, Mr. Harish Rawat. Mr. Rawat,
a lot of suggestions have been made by you also. A lot of people are expressing their concerns. I want to know from you, what's your assessment, in fact, of what the government is doing or the steps that the government has taken now? In fact, we all are very much worried. The situation is very चिंताजनक है, जिसको कहते हैं बहुत चिंताजनक है, और कैसे सरकार उसका सॉल्यूशन निकाले, उसके लिए जब मैं वहां गया था, रात रहा, लोगों से बातचीत की, तो और कुछ मेरे जो पुराने अनुभव थे उसके आधार पर हमने एक संघर्ष समिति के लोगों से मिल करके 7 सूत्री मांग पत्र बनाया और वो हमने चीफ मिनिस्टर को दिया, और चीफ मिनिस्टर को ये सजेस्ट किया कि पहला कदम आप उठाइए, लोगों में कॉन्फिडेंस बने। तो एंड चीफ मिनिस्टर हैज फॉलोड दैट एंड ही स्टेड ओवरनाइट देयर एंड उन्होंने उन लोगों से बातचीत की। तो दूसरा हमने कहा उस समय, बल्कि वहां के उनके वहां के जो वर्तमान एमएलए हैं उनसे मैंने बातचीत करके मैंने कहा, भाई जोशीमठ से कोई जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि जोशीमठ की अपनी आध्यात्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक कई दृष्टिकोणों से बड़ा महत्व है। तो लोग मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन जोशीमठ शब्द के नाम को अपने साथ जुड़ा देखना चाहेंगे। तो मैंने उनसे कहा कहीं और लगा हुआ एरिया जो है हम उसमें नई बसासत बसा सकते हैं। एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट टुडे देयर इज अ न्यूज इन द पेपर दैट द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर हैविंग ए न्यू जोशीमठ, नया जोशीमठ जो है बसाने की बात जो है, जो हम कह रहे थे, जो मैं बराबर कह रहा था पिछले एक हफ्ते से, गवर्नमेंट हैज इज वर्किंग ऑन दैट फॉर्मूला। सेकंड बात हमने उनसे, थर्ड बात हमने उनसे कही कि आप जो है लोगों से कही कि इस जोशीमठ को हम पुनर्निर्मित करेंगे, और हमने ये करके दिखाया। केदारनाथ की आपदा इससे भीषणतम आपदा थी, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने केदारनाथ करके दिखाया है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि उस समय सोनिया जी और राहुल जी हमारे साथ थे, और आज भी मैंने मुख्यमंत्री की स्थिति अच्छी है, उनकी लीडरशिप उनके साथ है, मोदी जी, अमित जी उनके साथ हैं। तो इसीलिए हमने सजेस्ट किया कि इसको राष्ट्रीय आपदा हो और केंद्र सरकार पैसा दे, ताकि जोशीमठ को, जो आज का जोशीमठ है, जो डूब रहा है, जो ध्वस्त हो रहा है, जहां ध्वस्तीकरण हो रहा है, वहां जो है उसको बचाने का संकल्प लीजिए, उसको फिर से पुराने स्वरूप में, सुरक्षित स्वरूप में लाने के लिए। और कोई भी कदम उठाना पड़ता है उसके लिए, एनटीपीसी की टनल बंद करनी पड़ती है, टनल बंद करिए। 4 धाम यात्रा मार्ग में जो आप ब्लास्टिंग इत्यादि कर रहे हैं, नीचे जोशीमठ के नीचे के एरिया में जो अलकनंदा से लगा हुआ एरिया है, उसमें 4 लेन बाईपास बना रहे हैं आर्मी के नाम पर। अब उससे स्थितियां और कंपाउंड होंगी, जोशीमठ जो है रहने बचने की कोई भी संभावना नहीं रह जाएगी। हमने कहा इन सब चीजों को आप छोड़िए, कहिए कि नहीं, और इसके बचाने के पूरे राष्ट्रीय उपाय इसको पुराने स्वरूप में लाने के किए जाएंगे। अब सवाल है जनता का कॉन्फिडेंस कैसे बने। उसके लिए हमने उनसे कहा कि आप बद्रीनाथ के रेट पर लोगों से कहिए कि हम आपको रिहेबिलिटेशन पैकेज दे रहे हैं, आपके मकानों की दर निकाल रहे हैं, और उसमें चीफ मिनिस्टर ने अच्छा किया है। उन्होंने कहा कि मार्केट रेट पर देंगे, लेकिन द मार्केट रेट इज कंफ्यूजिंग, उसमें और क्लियरिटी की जरूरत है, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस। और दूसरा, उसमें कवर कौन कौन होंगे जोशीमठ में, जैसे हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ में सब लोगों को, कोई भी छोटे से छोटा स्टेक होल्डर, यहाँ तक कि गाड़ी के सफाई करने वाले को भी हमने उसमें सम्मिलित किया, हमने मोची को भी सम्मिलित किया, हमने डोली पालकी वाले को भी सम्मिलित किया, गांव के छोटे खोमचे वाले को भी सम्मिलित किया, सब्जी के सप्लायर को भी सम्मिलित किया, दूध पैदावार करने वाले को भी सम्मिलित किया। ये तीर्थ स्थल है, यहाँ अलग अलग तरीके की सर्विसेज देने वाले लोग हैं। हमने कहा उन सबको इसमें सम्मिलित करिए। और अब इन्होंने जो 1.5 लाख का पैकेज कहा है अंतरिम सहायता के तौर पर, जो है हो सकता है उसमें ये सबको कवर करे। अब क्या कर रहे हैं, ये चीजें जो है आने वाले दिनों में क्लियर होती जाएंगी। यदि ये सब चीजें क्लियर हुई तो फिर 2 ही चुनौतियां राज्य के सामने रह जाएंगी, एक नया जोशीमठ बसाने का, और जिसके लिए जमीन उपलब्ध है। 4 जगह हैं जोशीमठ में जो उपलब्ध हैं,
जो वहां के विधायक राजेंद्र भंडारी जी ने और वहां के संघर्ष समिति ने मुझे लिखा है, उन जगह जो है वो जो नया जोशी मठ बसाया जा सकता है। और दूसरा, इस जोशी मठ को फिर से हम रिक्लेम, फिर से पुराने स्वरूप में लाएंगे, ये निर्णय लेना पड़ेगा, ये संकल्प लेना पड़ेगा। उसके लिए टर्मिनल बंद करना है तो बंद करिए। कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में 3 ऐसे प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट जो है, जो 2 तो करीब करीब, एक आधे में बन गया था, एक 80% कंप्लीट हो गया था, दूसरे में भी शुरुआत हो गई थी। तो उत्तरकाशी को बचाने के लिए उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा, प्रणब मुखर्जी साहब जो बाद में राष्ट्रपति बने, वो वित्त मंत्री थे, दोनों लोगों ने कहा कि कुछ भी पैसा लगना पड़ता है, कुछ भी नुकसान हो रहा है, वो नुकसान देश उठाएगा, लेकिन उत्तरकाशी को बचाएगा। उन्होंने कहा ये देवस्थल हैं, ये मानवता की धरोहर है हमारे पास। All right. You see, Mr. Rawat, see, land subsidence is a natural phenomenon. As one of the guests here also said that it is a natural process which has been exaggerated and it has been escalated because of man-made activity. And it's not like these man-made activities have started only in the BJP regime. Successive governments are responsible, perhaps even your own. So then where does the buck stop? Who should one blame? For instance, just a small example, in our debate, we also discussed on traditional ways of constructing a house. I don't see any strong policy through which people can do that. बिल्कुल आपने सही फरमाया, और मैं इस बात को, ये सब ने स्थिति की गंभीरता को देखा, किसी ने समझा भी, कुछ उपाय किए। जैसे जब हमारी सरकार थी 2014 में, जब मैं हिमालयन डिजास्टर का जो है वो कर रहा था, तो थोड़ा प्रभाव उसका जोशीमठ में भी था। तो हमने स्टडीज निकाली, एक मिश्रा कमेटी की स्टडी निकली, उसमें हमने 4 निर्णय लिए। एक तो जहां जो है धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है, उसके दोनों तरफ हमने कहा ठोकरे बनाओ, फ्लड प्रोटेक्शन वर्क करो, बल्कि कुछ काम स्टार्ट भी हुआ। दूसरा हमने कहा ड्रेनेज सिस्टम जो है पीडब्ल्यूडी को सौंपो और पूरा एक साउंड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ तैयार करो, और सीवर लाइन के लिए हमने कहा आप जल निगम को काम दो, और उसका निर्णय किया। और साथ साथ हमने वेस्ट डिस्पोजल के लिए नगर पालिका को जिम्मेदार बनाया। और ऐसा नहीं है कि कदम नहीं उठाए गए, बल्कि भारत सरकार को हमें उस समय, वो प्रपोजल आज भी होगा, हमारी सरकार से प्रपोजल गया कि हमको ऐसा लाइट मटेरियल दिया जाए जो हीट एंड कोल्ड दोनों का रेसिस्टेंट हो। लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि जो ये 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग है, ये इसका डीपीआर मेरे समय में तैयार हुआ, बल्कि लोस टोटन प्रधानमंत्री जी ने किया, अध्यक्षता मैंने की। लेकिन हमारे जाने के बाद पूरे कंसेप्ट को उन्होंने बदल दिया। हमारे उसमें था मिनिमम कटिंग, मैक्सिमम विड्थ जितनी ली जा सकती है थ्रू वॉलिंग और मग डिस्पोजल के जरिए, और इन्होंने जो है उसको 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग से कहना शुरू किया, ऑल वेदर रोड, और उसके जरिए अंधाधुंध कटिंग कर दी। जोशीमठ में हमने कहा था वैज्ञानिक सर्वे के बाद पुख्ता हो जाएगी, तब वहां आगे कुछ भी उसके चौड़ीकरण आदि का काम होगा। इन्होंने वहां पूरी कटिंग कर रहे हैं। जो सरकार जो है मंगू और उतीस के पेड़ों को, देवदार के पेड़ों को काट करके सड़क को चौड़ा कर रही हो, तो आप समझ का अंदाज लगा सकते हैं। ये सरकारों का अंतर है। हमने जिस समझ से काम लिया, उस समझ को हमारे बाद आने वालों ने फॉलो ही नहीं किया। तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं। अब एनटीसीबी की टनल है, लोग भाजपा के लोग कहते हैं एनटीसीबी का प्रोजेक्ट तो कांग्रेस के समय में प्रारंभ हुआ। हाँ, कांग्रेस के समय में क्लियरेंस मिली, लेकिन एक इस तथ्य को भी तो ध्यान में रखना चाहिए। अब हरिकोटा है, हरिकोटा कांग्रेस के समय में अंतरिक्ष का वो हुआ, नेहरू जी ने अंतरिक्ष आयोग का गठन किया। हरिकोटा से यदि एकाध 2 सैटेलाइट लॉन्च ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, विल यू ब्लेम द नेहरू फॉर दैट? तो पुरानी सरकारों को ब्लेम करने से नहीं, चीजों को जो है आप कैसे सुधारते हैं। जब आपकी समझ में कुछ खतरा आ रहा है तो उसका आप कैसे मुकाबला करते हैं। तो ये ब्लेम गेम के बजाय जो है, मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा और मैंने अपने लोगों से भी कहा कि ब्लेम गेम के बजाय हाउ वी कैन कोऑपरेट, हाउ वी कैन असिस्ट दिस प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, हमको उस पर काम करना चाहिए। और उसके लिए हमने सुझाव दिए, और मैं आई एम ग्रेटफुल टू माय नेशनल लीडरशिप कि उन्होंने भी इसको राष्ट्रीय आपदा की बात कही, ताकि राज्य के पास रिसोर्सेज की कमी ना हो सके। अब इट इज फॉर द प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट
and the central government to act. और दोनों चीज करनी है, नया जोशी मठ भी बसाना है, पुराने को फिर से व्यवस्थित रूप में स्वरूप में पुराने स्वरूप में लाना है, क्योंकि शंकराचार्य की तपस्थली दूषी नहीं हो सकती है। भगवान बद्रीश का विश्राम गृह शीतकाल का कोई दूसरा नहीं हो सकता है। रामायण की संस्कृति जिसको यूनेस्को ने संरक्षित माना है वो कोई नहीं हो सकता। बायोडाइवर्सिटी का आप अंदाज इसी से लगा लीजिए, हनुमान जी जिस संजीवनी बूटी के लिए आए वो द्रोण पर्वत यही है, इसी के पास में द्रोण पर्वत है। तो ये बायोडाइवर्सिटी का भी केंद्र है, संस्कृति का भी केंद्र है, हर तरीके से जोशी मठ है, तो उसको फिर से पुराने स्वरूप में लाना है। और हमने भगवान की कृपा से, राहुल जी और सोनिया जी के सहयोग से और मनमोहन सिंह जी की उदारता से उस समय ये करके दिखाया है केदारनाथ के अंदर। आज ठीक है, हमसे इस यूएसपी को छीनने के लिए प्रधानमंत्री जी वहां आकर के बराबर ध्यान लगा रहे हैं, मगर बैठ तो उसी गुफा में रहे हैं जिसका निर्माण हमारी सरकार ने किया था। तो ये है इतिहास में, ठीक है, उनकी कोशिश ठीक है कि केदारनाथ का श्रेय कांग्रेस के साथ जुड़ा न रहे, मगर हम चाहते हैं कि बद्रीनाथ जोशी मठ को फिर से पुराने स्वरूप में बचाने का श्रेय भले ही केंद्र सरकार को मिले, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, मगर मिलना चाहिए, क्योंकि जोशी मठ को पुराने स्वरूप को यथास्थिति दिलाना ये राष्ट्रीय आवश्यकता है। ये हमारे सामने अध्यात्म को बचाने, अपनी संस्कृति को, अपनी सनातन संस्कृति को बचाने की बड़ी चुनौती है। तो मैं अकेले इसके लिए धामी जी के लिए नहीं कहूंगा कि धामी जी करें इसकी रक्षा, हम ये चाहेंगे कि इसकी रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार भी उदारता से मदद दे। All right, Mr. Harish Rawa, thank you very much for joining us. With that, we come to an end of this edition of The Big Fight. News continues on the other side. Stay with us.